अब देखो ये हम लोग देख रहे हैं कि 2x2 रेक्टेंगुलर गेम है, तो उसका सोल्यूशन कैसे किया जाए। ठीक है, एक थ्योरम है, उसी थ्योरम का यूज करेंगे, उसमें एक फॉर्मूला डिराइव है, उस फॉर्मूले से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फॉर एनी 2x2 2-person जीरो सम गेम विदाउट एनी सैडल पॉइंट, मतलब यहाँ पे सैडल पॉइंट कोई नहीं रहेगा। हैविंग द पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर प्लेयर A1 A2 B1 B2, ये प्लेयर ए का पे ऑफ मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22। द ऑप्टिमम मिक्स्ड स्ट्रेटजीज फॉर ए ऐसे इक्वल टू A1 A2 के लिए P1 P2 है, और FB B1 B2 के लिए Q1 Q2 है। ये B1 B2 है प्लेयर बी का, और ये A1 A2 है प्लेयर ए का। आर डिटरमिन्ड बाई P1 by P2 is equal to A22 minus A21 by A11 minus A12, and Q1 by Q2 is equal to A22 minus A12 by A11 minus A21, where P1 plus P2 equal to 1 and Q1 plus Q2 equal to 1. Next, finally, the value new of the game to A is given by, देखो इसका फॉर्मूला, new is equal to A11 A22 minus A21 A12 by A11 plus A22 minus A12 plus A21। तो ये फॉर्मूले याद रखने होंगे तुम्हें। प्रूफ देखते हैं इसका। लेट ए मिक्स्ड स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए गिवन बाय SA is equal to A1 A2 P1 P2, where P1 plus P2 is equal to 1 because this is the probability. Thus if player B moves B1, if player B moves B1, मतलब player B का सिलेक्शन है B1 का, the net expected gain of A will be E1P is A11 P1 plus A21 P2। ये फर्स्ट कॉलम के A11 A21 है। And if B moves B2, the next expected gain of A will be E2P is A12 P1 plus A22 P2। Here A12 and A22, this is for second column in the payoff matrix for A. Similarly, if B plays his mixed strategy as B is equal to B1 B2 Q1 Q2, where Q1 plus Q2 is equal to 1, this is also a probability. Q1 Q2 are probabilities, therefore their sum is 1. Then B's net expected loss will be, इनका लॉस क्या हो जाएगा, E1Q A11 Q1 plus A12 Q2 if A plays A1, अगर प्ले A1 खेलता है, A1 चॉइस करता है, and E2Q is A21 Q1 plus A22 Q2 if A plays A2, अगर A का जो चॉइस है वो A2 आता है। The expected gain of player A when B mixes his moves with probabilities Q1 and Q2 is therefore given by EPQ is Q1 into A11 P1 plus A21 P1 means Q1 into E1P plus Q2 into A12 P1 plus A22 P2 means Q2 into E2P. This is the formula. Player A would always try to mix his moves with such probabilities so as to maximize his expected gain. मतलब A अपना गेन मैक्सिमाइज करना चाहता है और B अपना गेन, अपना लॉस को मिनिमाइज करना चाहता है। Now EPQ is written as Q1 into A11 P1 plus A21, this is P2, तो P2 के लिए हो जाएगा 1 minus P1 and plus this is Q2, so Q2 की जगह लिख देंगे 1 minus Q1 within bracket A1 to P1 plus A22 into 1 minus P1, this is for P2. So this is equal to A11 plus A22 minus A12 plus A21 P1 Q1 plus A12 minus A22 P1 plus A21 minus A22 Q1 plus A22। ये मैनिपुलेशन थोड़ा सा करने पर तुम्हें ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। This can be written as lambda times P1 minus A22 minus A21 by lambda into A1 minus A22 minus A12 by lambda plus A11 A22 minus A12 A21 by lambda, where lambda is given as A11 plus A22 minus A12 plus A21। अगर lambda की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे then you will get the same result as this one। तो
इस फॉर्म में हमको मैनिपुलेशन के बाद मिल जाएगा। अब देखो, इफ a chooses p1 is equal to a22 minus a21 by lambda, यानी कि p1 की वैल्यू यही ले लिया जाएगा, then this will be 0. So EPQ will be this one only, a11 a22 minus a12 a21 by lambda. He ensures an expected gain of at least a11 a22 minus a12 a21 by lambda. तो अगर p1 की वैल्यू ये लेंगे तो EPQ मिलेगा इतना गेन। And similarly, if B chooses Q1 is equal to A22 minus A21 by A12 by lambda, यानी कि Q1 अगर ये अडॉप्ट कर लेता है तो then B will limit his expected loss to at most A11 A22 minus A12 A21 by lambda. अगर Q1 की वैल्यू दिस वन ले लिया जाएगा तो भी ये जीरो हो जाएगा, ये टर्म फर्स्ट टर्म, तो EPQ will be this one. These choices of P1 and Q1 will thus be optimal to the two players. यानी कि A का जो मैक्सिमम गेन है ये दिस वन हो रहा है, वही B का मैक्सिमम लॉस है वो दिस वन हो रहा है, तो ऑप्टिमम हो गया क्योंकि बोथ आर सेम। Thus we get P1 is equal to A22 minus A21 by lambda and P2 will be 1 minus P1. Substitute here the values of P1, so you get A11 minus A12 by lambda. Q1 is A22 minus A12 by lambda and Q2 is 1 minus Q1. So it is A11 minus A21 by lambda. Substitute the value of Q1 and evaluate this using the formula for lambda as A11 plus A22 minus A12 plus A21. And nu is your net expected gain of A or net expected loss of B. This is A11 A22 minus A12 A21 by lambda. So we will have what? Find the value of P1 by P2. It will be given as A22 minus A21 by A11 minus A12. Lambda will cancel each other. And Q1 by Q2 is A22 minus A12 by A11 minus A21. Lambda cancels. And nu is equal to A11 A22 minus A12 A21 by this lambda. Lambda means A11 plus A22 minus A12 plus A21. So these three are formulae which you need to remember so that you can solve the problem. This completes your proof of the theorem. अब एक एग्जांपल है उसी थ्योरम पे बेस्ड है। देखो, for the game with the following payoff matrix, determine the optimum strategies and the value of the game. ये P1 P2 है, दो प्लेयर के लिए उनका पे ऑफ मैट्रिक्स ये P1 के लिए दिया हुआ है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो, क्लियरली द गिवन मैट्रिक्स इज विदाउट ए सैडल पॉइंट, इसमें सैडल पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ रो मिनिमा 1 मिल रहा है, रो मिनिमा यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ कॉलम मैक्सिमा 5, कॉलम मैक्सिमा 4, तो कोई भी कॉमन इसमें पोजीशन हमको नहीं मिल रही। So this game is without a saddle point. So the mixed strategies of P1 and P2. Now अब mixed strategy की बात हो गई, तो mixed strategy क्या होगी? SP1 1 2 P1 P2 सपोज है, और SP2 1 2 Q1 Q2 है, where P1 plus P2 is 1 and Q1 plus Q2 is 1. Now if EPQ denotes the expected payoff function, जैसे हम लोग पहले पढ़ लिए थे, then EPQ can be written as, फॉर्मूले का यूज करेंगे 5 times P1 Q1, this is your 5 means A11 P1 Q1 plus this is your A21 means 3 into 1 minus P1 Q1 plus this is A12 means 1 into P1 1 minus Q1 plus 4 means this is A22 1 minus P1 into 1 minus Q1. So its value comes out to be equal to 5 P1 Q1 minus 3 P1 minus Q1 plus 4. It can be written as 5 P1 minus 1 by 5 into Q1 minus 3 by 5 plus 17 by 5. If you open this one, you will get this one. Now if P1 equal to 1 by 5, suppose P1 is taken as 1 by 5, so this first term will vanish and you will have this 17 by 5 only. So he ensures that his expectation is at least 17 by 5. He cannot be sure of more than 17 by 5. मतलब 17 by 5 से ज्यादा उसको नहीं मिल सकता।
बिकॉज बाई चूजिंग Q1 इज इक्वल टू 3/5, Q1 3/5 ले लेगा तो भी EPQ 17/5 ही रहेगा। P2 कैन कीप EP1 Q1 डाउन टू 17/5। अगर ये P1 सोचे कि हम 1/5 ये 17/5 से ज्यादा ले लें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन केस में तुरंत ही जो सेकंड प्लेयर है वो 3/5 रख देगा, तो भी एक 0 हो गया, वो भी उसका मैक्सिमम 17/5 तब भी रहा। So P1 might as well settle for 17/5 and P2 reconcile to 17/5, और P2 का जो मैक्सिमम ये लॉस होगा वो 17/5 हुआ। Hence the optimum strategies for P1 and P2 will be, as P1 is 1 2, this is P1 means 1/5, P2 will be 1 minus P1, so it is 4/5, and as P2 is 1 2, Q1 means 3/5 and Q2 will be 1 minus Q1/5 means 1 minus Q1 means 2/5, and the value of the game new is your 17/5। तो यहाँ पर आपका ये थ्योरम भी हो गया और उस पे एक एग्जांपल भी हो गया। ये इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डिफिकल्टी अगर लगती है तुम्हें तो मुझे पूछो, और इसके अलावा इसको यूट्यूब पे भी हम डाल देंगे जल्दी ही, वहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में अपना बात रख सकते हो।